What makes a great teacher? Let's figure out. When we think of a great teacher, we always picture the perfect classroom, decorated boards, colorful classroom and quiet students, right? But in last 10 years working with school, teachers and the entire ecosystem, I realized great teaching is entirely different than what we picture. So what a great teaching is? According to me, a great teaching or a great teacher is somebody where every children in the classroom feel safe. They feel excited whenever see their teacher. They want to learn. They're eagerly waiting for the teacher to come to the classroom, and they feel comfortable to ask questions. I remember in my childhood, I was sitting at the back and ऑलवेज फियर, और मैं हमेशा डरती थी क्वेश्चंस पूछने में, बिकॉज अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछा या टीचर ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया और मुझे नहीं पता होता तो शायद दूसरे दोस्त या दूसरे क्लासमेट मुझ पे हंसते. एंड आई स्टिल सी दिस हेजिटेशन आफ्टर सो मेनी ईयर्स इन आवर चिल्ड्रन. whenever I go to classroom, I sit quietly in the classroom. I see that a great teaching for me is now when a teacher is standing and all the students are raising their hands, they want to talk, they want to speak, they want to respond, they feel comfortable to ask any kind of a question. So it does not have to be a quiet classroom, but I think it is a classroom जहाँ पे सारे बच्चे खुश है, excited है and motivated है to participate. So I'll also tell you a story. So once I was in Balaghat. So Balaghat is in Madhya Pradesh. मैं एक स्कूल पे गई थी and there was a class. मैं प्रिंसिपल मैम के साथ ऐसे स्कूल पे जा रही थी एंड देयर वाज अ क्लास जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही थी. तो प्रिंसिपल मैम रश टू दैट क्लासरूम एंड शी वाज लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है. एंड मैं भी मैम के पीछे पीछे गई एंड आई सॉ दैट द टीचर वाज डूइंग एन एक्टिविटी and everybody was excited because they were getting the opportunity to do the activity, right? Then I said ki ma'am, let it be, let us just observe ki kya ho raha hai class mein. And what we observed was beautiful. We saw that teacher got all of this activity kits. I mean ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के glasses लेके आए थे. They had sand and they were doing some water activities over there. And सारे बच्चे उसको कर रहे थे. They were so excited. And after the activity, the teacher actually asked them questions. तो एक रिफ्लेक्शन सर्कल हो रहा था जहाँ पे बच्चे एक्साइटेड थे कि वो अपना रिफ्लेक्शन शेयर करें. वो यह शेयर करें कि उन्होंने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी. एंड इट वाज सच अ वंडरफुल टू सी. एंड दैट डे आई थिंक प्रिंसिपल मैम को भी ये समझ में आया कि नॉट ऑलवेज अ नॉइजी क्लासरूम इज बैड. समटाइम्स नॉइजीएस्ट क्लासरूम में सबसे ज़्यादा लर्निंग हो रही है. दैट्स द मोस्ट एंगेजिंग classroom, that's the most exciting classroom to see and observe. And I think that was a turning point for her and also for me, because sometimes we also feel that अरे discipline होनी चाहिए classroom में, but I think that day it made me also believe that जहाँ पे बच्चे बहुत ही silent है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है वही गड़बड़ है. Second learning that I had is that in many classroom अगर आप देख रहे हो कि टीचर इज स्टैंडिंग एंड स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स दैट द स्टूडेंट और द क्लासरूम इज एंगेज्ड. बट द प्रॉब्लम इज वेयर द टीचर इज स्पीकिंग फॉर 40 minutes and students are quiet and listening. Oh my god, that's a red flag, right? That means that it's just one side of teaching, right? कोई उसको सुन नहीं रहा है, कोई हमें पता नहीं है whether students are understanding, not understanding. What is the reason that students are so quiet? All these things is a red flag. So I believe that जहाँ पे there is a shared responsibility कि teacher is talking, student is talking at the same time, I think that's a perfect classroom for me. And the another thing that makes a classroom perfect is when I believe that students come up with their own question. They come and they ask questions. वो आते हैं और वो कोई भी क्वेश्चंस के बारे में टीचर से पूछ रहा है और टीचर्स उसको एड्रेस कर रहा है. और वी आर टीचर्स, वी आर ह्यूमंस. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पाते, बट दैट्स ओके.
अगर टीचर्स उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है उस क्वेश्चन को उस टाइम पे, द टीचर कैन पोलाइटली से दैट आई विल कम बैक विद दिस, राइट? सो आई थिंक दैट शोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल इनफ, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे हर बच्चों को मौका दिया जा रहा है अपनी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने का. तो when I think of all of this, I think this is perfect teaching for me. So yeah, that's it. A great teacher does not have to have a perfect plan. Always remember, a great teaching does not have to start with a perfect lesson plan. It should start with caring, it should start with believing in your students and creating a space where students feel comfortable to talk to you, right? So yeah, that's it for today. If you are a teacher, parent or someone who just love learning, so just go and subscribe my channel Diaries of an Educator. We'll keep sharing such stories, such strategies that will help children to bloom, and let's build a community. At last, don't forget to comment and tell me what do you feel about a perfect teaching. Stay tuned for more stories.